So welcome back to the channel once again, and hope you're liking this series of RSI. And जो मैं आज आपको बताऊंगी, जो मैं आज आपको सिखाऊंगी, I don't think so बहुत जगह आपको YouTube पे वो देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा तो इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं देखने को मिलेगा, right? और this is called hidden divergence, divergence in the RSI, और इसको हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जब भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में हिडन डाइवर्जेंस मिलती है, आपको ये याद रखना है कि ये बहुत बड़ा ट्रेड बनने वाला है, राइट? बट ऑफ कोर्स यू विल टेक ऑल द कंफर्मेशंस। जैसे आपको रिवर्सल कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, अगर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो एक डबल कंफर्मेशन होता है। तो मैं इसको आपको डिटेल में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन माय स्क्रीन, but I'm your host, Dr. 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩. You can follow me on Twitter, you can follow me on Telegram, you can follow me on YouTube, and wherever you want, you will be able to get the best research by me, and hoping to see you all there, right? And ये वाला वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगता है, give a thumbs up and share it with your friends. I'm sure a lot more people will benefit, right? ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है लोगों को एजुकेट करने का, ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी लेके आनी है, एंड ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि आप लोगों का प्रॉफिट बने, बस, एंड ऑफ द डे, दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड लर्न अबाउट डाइवर्जेंस. So guys, we are here on the screen and we're going to talk about the divergence, right? किस चीज की डाइवर्जेंस की बात करेंगे हम? अगर आप देखोगे, मैंने ग्राफ पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और निफ्टी स्पॉट, राइट? मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर, सो इट इज द निफ्टी स्पॉट. एंड नीचे मैंने आरएसआई लगा रखा है और उसमें से 30, 40, 60, 70 सब रिमूव कर दिया, केवल आरएसआई रखा. टाइम फ्रेम क्या है हमारा? 1 डे का टाइम फ्रेम है, और इसमें हमको डाइवर्जेंस ढूंढनी है. मतलब ऐसी जगह जहां पे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर फ्रेश हाई बना रहा है, बट आरएसआई जो है वो फ्रेश हाई नहीं बना रहा है. अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70, 60, 40, 30, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, यू नो, लाइक यू हैव टू सी द रिलेटिवनेस. यहाँ पे आप देखो, अब इस जगह पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, तो यू विल सी एट दिस प्लेस यहाँ पे, एंड अनदर वर्टिकल लाइन आई विल ड्रॉ यहाँ पे इस जगह पे, राइट? यहाँ पे जो प्राइस है, आरएसआई का वैल्यू देखो आप हायर है, कुछ वैल्यू है आरएसआई का, आरएसआई का वैल्यू है कुछ 81, राइट? 81.90. उसके बाद प्राइस और ऊपर चला गया है, राइट? बट आरएसआई का वैल्यू क्या है? केवल 71, राइट? सो आरएसआई इज गोइंग डाउन, प्राइस इज गोइंग अप. It is a fictitious move, right? A move not supported by volumes and not supported by momentum, right? When such a thing happens, if you see a candlestick pattern, which is basically a reversal candlestick pattern, you can go for a short, right? So here, if you see, this is a 3 candlestick pattern, right? आप reversal candlestick pattern को देखिए, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई एंड फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई. When the below this candle and you see the RSI is giving you a signal कि there is a divergence. इस जगह के नीचे आप 15,276 के नीचे you can go for a short, right? That's a very very good trade. So see, when I'm telling you about divergence, doesn't mean कि it's a holy grail. There's no holy grail in stock market, you know. ऐसा नहीं है कि 100% sure shot है कोई भी चीज. Everything is a probability. Like I was reading comment, you know, some I have told you to keep IGL and NGL on radar, right? आप लोगों ने रडार का मतलब क्या है? अब मैं IGL आपको दिखाती हूँ. मैंने आपको बोला था IGL को आप अपने रडार पे रखिए, ठीक है? Now when I told you keep it on your radar, doesn't mean you take an entry on this, right? यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी थी इसकी कुछ, आई थिंक यहाँ पे दी थी एंट्री, राइट? 407 और 410 के आसपास आपको एंट्री दी थी, राइट? नेक्स्ट डे हैव अ लुक एट इट, मार्केट ओपन गैप अप, राइट? मार्केट ओपन गैप अप. मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिख के बताया हुआ है. आई हैव टोल्ड यू इन राइटिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल कि अगर आपको कभी भी गैप अप ओपनिंग होती है, यू डोंट हैव टू टेक एन एंट्री, राइट?
You don't have to take an entry, and I have told you ample times. Every day I do talk about it कि कभी भी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट, कभी भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, you don't have an entry in the stock, right? Now see here, every day I reiterate the same statement. It's not that कि मैं कभी once in a while आपको बोलती हूँ avoid if gap up or gap down, right? So you have to avoid the stock if there is a gap up opening or a gap down opening. So next day IGL opened gap up, so ignore it, simple. And MGL, right? What about MGL? So radar doesn't mean you buy it, right? And MGL जहां से मैंने आपको buy दिया था 498, वहां से 460 का इसने हाई लगाया, और उसके 860 का, सॉरी, I've given a buy at 850 और 850 से 860 का हाई लगाया. जब भी आप 1-2% एफएनओ के स्टॉक में 1-1.5-2% प्रॉफिट पे चले जाते हो, यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस इन द प्रॉफिट जोन, बिकॉज सी एफएनओ में बहुत कुछ होता है. ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन सेलिंग होती है, फ्यूचर्स बाय होते हैं, फ्यूचर सेल होते हैं, हेज होती है पोजीशन, सब कुछ होता है, राइट? सो यू कैन नॉट से दैट स्टॉक आई मीन आपने दिया और यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. उसके बाद मार्केट भी आप देख लो गिर रहा है लगातार. अगर मार्केट गिर रहा है तो इसका सिंपली मतलब है कि आपका स्टॉक भी गिरेगा, और खासतौर से अगर एफएनओ का है, इट्स गोना गो अलोंग विद इट, राइट? तो एंट्री लेना, यू मस्ट हैव नोटिस्ड आई डिडंट गिव इट ऑन माय चैनल, राइट? अगर मुझे दिखता, इतना बढ़िया दिखता अगले दिन भी, I would surely have given it in channel. But anyway, let's come back to our learning process. Nifty 50, right? So, but again, I would say कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. MGL, IGL will not make your money zero. इतने खराब स्टॉक्स नहीं है. कुछ न्यूज होगा, कुछ क्रूड से रिलेटेड कोई न्यूज होगी. That is why they are going slightly down. So I'm going to show you again, you know, a very, very beautiful example of divergence. So see here, price has made a new high, and what has happened to the RSI? RSI has made a new low, right? Look at this place, which I'm going to mark for you. This place, have a look at this place. RSI is making a new low, right? New a higher low, lower high, and price has made a fresh high, right? And then we have a candle which is open equal to high, right? This candle, if you notice, on 19th of October is open equal to high. Just be assured that the market is planning to continuously go down, right? Market is planning to continuously go down from here, right? And look at the move, 18,400 से लेके 16,500, almost like 1900 point का drop आया, right? Which is not possible. So this is a very good sign of finding out divergence. By divergence, you can take good entry, right? So let's see what happens on the other side. अगर हमको buy करना है तो कभी ऐसी opportunity आती है, तो प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये मिलेगी अपॉर्चुनिटी. हो सकता है डाइवर्जेंस, बिकॉज ऑल प्राइस ड्रिवन एंड सेंटिमेंट्स ड्रिवन. अगर प्राइस भी ड्राइव कर रहा है, सडनली सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, देन एनीथिंग कैन चेंज, राइट? सो बट कीप इट ऑन रडार, यू नो, लाइक थोड़ी देर देखो, थोड़े दिन देखो, एक मतलब एंड ऑफ द डे देखो, 1-2 दिन वॉच करो, एंड देन यू कैन क्रिएट योर पोजीशंस. एटलीस्ट आप बाय नहीं करोगे. अगर जैसे सपोज हमने ऐसी कोई पोजीशन देखी है जहां डाइवर्जेंस हो रही है, आप लोग कॉशियसली ट्रेड करोगे, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर लोगे, राइट? एटलीस्ट नो दैट पार्ट ऑफ इट. यहाँ देखो, प्राइस ने नया हाई लगाया है, नया लो लगाया है, बट आरएसआई ने एक नया ऊपर की तरफ मूव दिया है, राइट? एक हायर लो लगाया है. आरएसआई ने एक हायर लो लगाया है, whereas price has made a new low. अगर प्राइस को गिरना ही होता तो आरएसआई ऊपर क्यों जाती? आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है, whereas price is showing the weakness. So that is why it's called hidden divergence. The price is making new low, but RSI is making a new high, right? So that is why after, you know, the confirmation of the you know, candlestick pattern, you can go for a long trade. And ये जो trades होते हैं generally they are for long duration. So the best way, because धीरे धीरे कैसे price increase होगा, it's not necessary कि बहुत जबरदस्त तरीके से increase होगा या decrease होगा. तो option selling is a very good idea, right? A lot of top you know, option writers use this method to write their positions. So this is again a very, very good method of finding out
like there's a divergence that you can see on the buy side as well as on the sell side. So this is what I have shown you on the Nifty. Quickly I will show you on Bank Nifty as well, right? But Bank Nifty क्या होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा volatile होता है. Like Nifty is a little less volatile, Bank Nifty is even more volatile. So when the volatility is higher, the technicals may not have that much strong significance. So I'm just trying to have a look. अगर आपको कहीं मिलता है तो Bank Nifty में आप date लिख के भेजना comment में. I will see it because अभी right now here I can see some divergence, right? So see at this place, this is let me just mark it for you. यहाँ से price तो ऊपर जा रहा है, right? But what is happening to RSI? RSI is making a new low, right? This is Corona, just before Corona, a few months before Corona, or maybe around November, December. Look at this is a divergence, right? And once you see a pattern or you see a triple top or triple bottom, triple top getting broken, you can go for a short and definitely there was a good fall, right? But यहीं पे आपको fall मिलेगा इस जगह पे. I'm not talking about this big fall, but have a look at right here इस जगह पे. यहाँ से आपको एक फॉल मिला है, एटलीस्ट ऑफ अबाउट 900 पॉइंट्स का फॉल आपको मिला है. So divergence works pretty well, but you got to see it, you got to watch it, right? And with this I will be signing off. Hope you liked this video, and if you've liked it, if you've learned something new, please write it in the comment box. And एक और divergence मुझे जो दिख रही है मैं आपको quickly दिखा देती हूँ. Just have a look at this place. Price is almost flat. And what is happening to RSI? RSI is going up, right? RSI is making new high. So whenever this barrier is broken, जो पिछली candles के साथ barrier बना हुआ है, जैसे ही वो break होता है, you can go for a buy, right? So 2812 से 30810, almost like 300-400 points आपको मिले हैं. No, 3000 points मिले, sorry, 3000 points आपको मिले हैं. So which is a good move, right? So you can capture very big move अगर आपको divergence समझ में आता है. और you can do it in stocks as well. I know a lot of stocks where I worked on divergence. So if you please write stocks and their dates of divergence, I will just do the analysis for you in next video. Bye bye, see you, and please write in the comment box, give a thumbs up, and follow me on my Telegram. You can follow me on my Twitter handle as well. Bye bye, see you.